Hello guys, how are you? I'm very good as you can see. So here I am and I'm back. So today I'm gonna share with you a green cut crease makeup look, intense bridal green smoky and cut crease whatever you call. So very first I'm उसके बाद में एक लाइट टोन का कंसीलर लेके अपना आईलिड अच्छे से प्राइम एंड सेट कर लूँगी। देन मैं इस पैलेट से ये लाइट ग्रीन कलर का शेड लेके अपना क्रीज लाइन में एज अ ट्रांजिशन कलर यूज़ करूँगी। फिर उसी कलर को मैं धीरे धीरे थोड़ा डार्क ग्रीन कलर से इंटेंसिफाई करूँगी एंड देन आई एम फोकसिंग ऑन द आउटर कॉर्नर। आई एम यूजिंग अ लिटिल बिट ब्लैकिश काइंड ऑफ शेड टू इंटेंस। आफ्टर दैट मैं एक लाइट कलर का कंसीलर शेड लेके मैं अपना क्रीज को कट कर लूँगी अच्छे से एंड फिंगर की मदद से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एंड आफ्टर दैट ये पैलेट से मैं ये ग्रीन शिमरी शेड अपना फिंगर की मदद से प्लेस कर दूंगी अपना कट क्रीज वाला एरिया में एंड उसको मैं और शार्प एंड क्रिस्प करने के लिए ब्रश की मदद से मैं उसको अच्छे से ब्लेंड। उसके बाद मैं ग्रीन कलर का ग्लिटर लेके अपना आईज़ में अच्छे से प्लेस कर लूँगी एंड देन आउटर कॉर्नर को और इंटेंसिफाई करने के लिए मैं एक ब्लैक कलर का शेड लेके उसको और ज़्यादा आउटर कॉर्नर में फोकस करूँगी एंड अपना क्रीज को और ज़्यादा इंटेंसिफाई करूँगी। फिर मैं अपना 2 फाउंडेशन मिक्स करके अपना फेस में ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से एंड ये मैंने एक शेड लाइटर टोन लिया है मेरे स्किन टोन से बिकॉज़ ये ब्राइडल लुक है। तो आप थोड़ा लाइटर शेड यूज़ कीजिए आपका फेस से एक टोन ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत देर तक रहता है एंड बाद में वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, सो दैट्स वाई। एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग सम पाउडर टू लॉक माई फाउंडेशन एंड माई फेस टू मैटिफाई माई फेस। इट विल लुक सुपर गुड। And don't worry about the products guys, I will link everything bottom bar below. You can check it out after you finish watching this video. So thank you. So let's just finish the whole eye look. I'm using some green kajal in my waterline and then I'm blending with some lighter green shade and little bit of smoking out, and after that I'm just applying some highlighter in my inner corner and my brow bone. After that I'm applying some mascara. You can apply some falsies, although that will change your whole look and it will look put together, but I personally don't really like eyelashes, so I skip it. And let's move on to the eyebrows. I personally really like thick and little bit bushy eyebrows. You can do whatever you want, but I like this way. Now I'm going to contour my face with this Hoola bronzer. It's a really nice bronzer and little bit of blush because I really like blush. Like, it's looking super fresh if you apply little bit more blush. Like, blush is the only thing that fades away super fast, so I'm here using a Nykaa one. It's super. And it's the final step is the highlighter. All of us love highlighter and I love highlighter guys. It's a bomb highlighter. Look at the glow, just the glow. It's super bomb. Oh my god, it's looking so gorgeous. If you don't like this much highlighter, please don't go crazy with the highlighter. Oh my god. And then I'm finishing off my makeup with some lipstick. It's in the shade Clay Crush. It's from Maybelline. It's super nude and looking super gorgeous, and mixing up with another nude shade. I will bottom bar below. Thank you so much for watching guys. I hope you like this look. If you want more this kind of look, please let me know in the comment section. I will love to do this kind of look. And thank you so much for watching. I will see you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Be a kind one and spread your love, my lovely people. Thank you so much.